Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you are looking on the screen, today's our topic is belongs to Islamic education. I am going to tell you the importance of praying Allah. It means dua. What is the importance of the dua? So, first of all, coming on this, are you listening me? Yes or no? Yes. So, first coming on that, what is dua word means? Dua is an Arabic word which means to call out. Which means to call out. Muslim use the dua to call out the Allah. To call out the Allah. Are you getting me? Dua is an Arabic word. Dua एक Arabic word है जिसकी मतलब क्या होती है? To call out. बुलाना किसको? Allah तबारक व तआला को. And also this is the greatest act of the worship in Islam. Students, greatest act. Try to know the importance of the dua. Number one point is dua is an Arabic word which means to call out, and it is the greatest act in the Islam. Are you understanding? I hope you are understanding. And in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, call on me, I will answer your prayer. I will answer your prayer. Call on me, I will answer your prayer. Allah subhanahu wa ta'ala फरमाते हैं कि दुआ मांगे, call on me. It means दुआ. I will answer your prayer. मैं आपको आपकी दुआ का जवाब दूंगा. It means this is the important thing when we are calling on Allah Almighty, then Allah is answering us. This is the important thing. Are you getting? So this is the main important thing. Allah subhanahu wa ta'ala saying in the Quran, call on me, I will answer you. And what is the Islam commands? Islam commands to the Muslim that direct their dua only to Allah. Direct their dua to only Allah. हमें जो डायरेक्टली जो कनेक्शन है दुआ का वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होना चाहिए. किससे होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होना चाहिए हमारा डायरेक्ट कनेक्शन दुआ का. In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala say, I do no more than invoke my Lord, and I do not join with them any false god. Allah tabarak wa ta'ala फरमाते हैं कि when you will call on a false god, किसी झूठे खुदा से आप help लेंगे, just I am able for a praying, just I am for you that you can do the prayer of me. It means Allah subhanahu wa ta'ala said directly pray on me, call on me, I will respond to you. I can complete your all wishes and best things that you want to in your life. Understand? And what is the another main important thing? A dua which comes straight from the heart is close link between man and God. ये क्या है? एक close relationship है किसके बीच में? इंसान और अल्लाह के बीच में. इंसान और अल्लाह के बीच में. It is the direct relationship. The dua is the essence and the most important part of the worship. अब ये direct link कैसे? दुआ just अल्लाह और उसके बंदे के बीच में एक direct link है. When जब हम मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, when we are call on, this is the direct link with the heart of the man and the Allah Almighty. This is the direct link. And after that, this is also important, after that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The student, when you will listen the name of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you say sallallahu alaihi wasallam or read Drood. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. And what is the hadith say? Hadith say, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best form of the worship is dua. The best form of the worship is dua. वर्शिप का जो बेस्ट फॉर्म है वो क्या है? दुआ है. एंड आई एम गोइंग टू रिपीट दीज ऑल पॉइंट्स. नंबर वन, दुआ इज अरबिक वर्ड विच मीन्स टू कॉल आउट, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कॉल ऑन मी, आई विल आंसर यू. मुझे बुलाएं, मुझसे दुआ मांगे, प्रे फॉर मी, आई विल आंसर यू. नंबर टू पॉइंट. एंड नंबर थ्री इज डायरेक्टली कनेक्ट, and direction of your dua is directly connected with Allah Almighty, not any other false god. And number four is this is directly linked with the Allah Almighty and the man. Understand? And number last important point was a hadith of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam that the best form of the worship is dua. This was the importance of the dua, and what type of things, which type of points you keep in mind when you are along with the
importance of the dua, you should keep some points in your mind when you call to Allah in dua. When we are calling Allah into the dua. So here is some points, students. How? Number one is, we must have faith that Allah is listening to us and that only He is capable of responding to all duas. हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जब मैं दुआ मांग रहा हूँ, when I am offering prayer of dua, Allah subhanahu wa ta'ala is listening me. Allah subhanahu wa ta'ala is listening me. Allah तबारक व ताला सुन रहे हैं and अल्लाह तबारक व ताला क्रिएटर हैं, उनके पास सारे अख्तियार हैं, वो मुझे हर जवाब देते हैं मेरी दुआ का। ये चीज़ हमारी माइंड में होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंस में आता है ना, जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें ये इंटेंशन होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ लिसनिंग मी। नंबर टू इज़ वी मस्ट एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्राम हिम। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये चीज़ भी हमारे माइंड में होनी चाहिए। वी एक्सपेक्ट गुड फ्राम हिम। वाई? बिकॉज अल्लाह इज़ क्रिएटर, ही नोज़ वेरी वेल व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर अस। सो हमेशा क्या करना चाहिए? वी मस्ट एक्सपेक्ट द बेस्ट फ्राम हिम। एंड नंबर 3 पॉइंट, आई थिंक आवर इंटेंशन मस्ट बी गुड एंड वी मस्ट प्रे ओनली फॉर द परमिसिबल थिंग्स। हमारा इंटेंशन, यानी कि आपने देखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, स्टूडेंट्स, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अमल का दारोमदार नीयत पे। तो हमारी इंटेंशन, हमारा इरादा, हमारी नीयत पॉजिटिव होनी चाहिए जब हम दुआ मांग रहे हैं, और किसके लिए? जो जायज़ दुआ हो वो हमें मांगनी चाहिए। ये वाली चीज़ भी हमें माइंड में रखनी चाहिए। एंड द नंबर लास्ट पॉइंट इज़ दुआ शुड बी मेड विद सिंसेरिटी एंड द अटेंटिव हार्ट। एक सच्चाई के साथ दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है? वैन आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग, सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन टू योर माइंड। दुआ सिंसेरिटी के साथ मांगनी चाहिए, अटेंटिव हार्ट के साथ, क्लीन हार्ट के साथ। वैन यू आर call Allah Almighty with the attentive heart and with the sincerity, inshallah, this is our iman, this is our faith. Allah Almighty gives whatever we will offer in our prayers and whatever we will say, and the best thing that is best for us. This was the main thing about the dua points you should keep in the mind. Dua is an Arabic word and it is the greatest act in of the worship, and points you should keep in mind that faith, Allah Almighty is listening to me, we expect good best from Allah Almighty, and our intention must be good. This was the importance of the dua. So from today, create a connection and increase your capability for praying the dua, and also call on Allah Almighty again and again. Inshallah, you will get a blissful life, because Allah knows very well what is good and what is bad for us. This was our today's lecture about the importance of dua. I hope you understood well. Inshallah, we will meet in the next lecture. Allah Hafiz wa Nasir.